Assalamu alaikum students. Today we will learn various research design used in research project. Research designs, definition and concept. A research design is the framework that has been created to seek answer to research question. A researcher at the time of designing the study also frame the research questions to be answered during the study, and for that purpose you need to use a design. Design is basically a framework that help the researcher in finding the answer of the research question he has framed in the beginning. तो एक ऐसा framework होना जरूरी है कि जिसकी हेल्प से रिसर्चर जो है वो फाइंड आउट कर सके, उस हाइपोथेसिस का assumption को या क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सके जो उसने डिजाइन किया था. A detailed outline of how an investigation will take place, data will be collected. So research design will make your research more comprehensive in a way that audience instantly get the idea how study would have been taken place and how researcher would have collected the data for the research. There are different kind of research design you can use, and the first one is independent group design. Each separate group of subjects in an experiment represent a different condition as defined by the level of independent variable. यहाँ पर subject जो होंगे उनके independent groups होंगे, dependent two different condition में different participants होंगे और वो ग्रुप जो है वो सेपरेट होगा जो एक ट्रीटमेंट कंडीशन से उसे गुजारा जाएगा. It is also referred to as between group design or between subject design. You can also call this independent group design as a between group design and between subject design as well. For example, one is experimental group and second is control group. So you can also identify the independent group design, especially in experimental method with the name of experiment or independent variable. And the second is control group. Because why it is control group? The control group that doesn't receive the treatment during the study. Two or more separate groups, each containing different divisions. So here participants will be assigned to both group independently. The participants of both group will be different from each other. ऐसा नहीं है कि एक में वही स्टूडेंट ग्रुप में लोग हैं और दूसरे में भी वही हैं. जैसे सपोज अगर आप एक क्लास से 40 स्टूडेंट्स आप सिलेक्ट करते हैं और 20 स्टूडेंट्स आप एक ग्रुप में हैं और 20 स्टूडेंट सेकंड ग्रुप में, तो वो जो 40 स्टूडेंट्स होंगे 20 एक ग्रुप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, दूसरे कंट्रोल ग्रुप में, बोथ विल बी डिफरेंट. तो वो एक वो डिफरेंट स्टूडेंट्स है, वो डिफरेंट स्टूडेंट्स है. जैसे यू कैन सेलेक्ट और असाइन male participant to one group, female participant to another group. You can also select married people for one group, unmarried for another group. तो ये different examples हैं. आप किसी भी तरह का जो है वो ग्रुप वो बना सकते हैं. It will depend upon the objective and purpose of your study. So you can form more than two groups as well. In some researches you find three different kind of groups. It depends upon the purpose and objective of your study. So considering the purpose and the aim of your study, you can form different groups, independent groups for your research purpose, but each group will be independent. Means participants of all groups will be different. So students, there is a class activity for you. You have to frame a hypothesis with independent group design. आपने एक ऐसा hypothesis बनाना है अपने research के लिए कि जहां पर आप एक independent group research design जो है वो use कर सकें. You are being given 5 minutes to complete that task. The second group is within group design. A within subject design is a type of experimental design in which all participants are exposed to every treatment or each subject participate in all conditions. This group design is used where researcher apply all kind of treatment on the same participants. There is a group of participants who will be provided the same kind of treatment or different kinds of treatment during the study. It is also referred to as repeated measure design. That's why it is also called repeated measure design. The different kind of treatments are given to the same participants.
तो यहाँ पर पार्टिसिपेंट डिफरेंट नहीं होंगे जैसे इंडिपेंडेंट ग्रुप डिजाइन में है कि वहाँ पर ग्रुप ए के पार्टिसिपेंट डिफरेंट है, ग्रुप 2 के डिफरेंट है, 3 के डिफरेंट है। यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ पार्टिसिपेंट सेम है और उन्हें डिफरेंट कंडीशन से गुजारा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इंटेलिजेंस टेस्ट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट एडमिनिस्टर ऑन ईच पार्टिसिपेंट। सो इफ आई सेलेक्ट 50 participants for my study and I need to administer, I want to administer intelligence test and aptitude test on these participants, then I will apply both kind of test on these participants I have selected for my study. So participant will be the same for all conditions. So here you can see there is one sample of participant researcher has selected for the study. So these participants will be given treatment 1 and then they will be given treatment 2 and then they will be given the treatment 3. तो ये 3 different kind की treatments हैं, 3 different conditions हैं और participants हर तरह की treatment जो है वो उन्हें दी जाएगी। तो यहाँ पर participant same है but ट्रीटमेंट कंडीशन जो है वो डिफरेंट है। स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव टू परफॉर्म एन एक्टिविटी। यू आर रिक्वायर्ड टू फ्रेम अ हाइपोथेसिस इन ऑर्डर टू यूज विद इन ग्रुप डिजाइन फॉर योर रिसर्च। सो यू आर बीइंग गिवन 5 minutes to frame the hypothesis so that you can use within group design. So random group design is another research group design a researcher can use for the research purpose. A randomized group design is one in which subjects are randomly assigned to the different groups meant for the different conditions or values of the independent variable. Here researcher will again form the groups and will randomly assign the participant with the same characteristics to both groups. Here researcher जो है क्योंकि उसने independent variable को use करना है, treatment को use करना है तो वो फिर रैंडमली उन्हें असाइन करेगा और कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होंगी ताकि उनमें जो है वो किसी किस्म का डिफरेंस ना हो। फॉर एग्जांपल, पार्टिसिपेंट्स आर रैंडमली असाइंड टू एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप। सपोज रिसर्चर हैज फॉर्म्ड 2 different groups, experimental group and control group. So researcher will here randomly assign the participants to both group in order to make them equivalent. तो वहाँ equivalent उनको करना इसलिए जरूरी होता है अगर उनमें डिफरेंस होगा इनिशियल में बिफोर अप्लाइंग द ट्रीटमेंट, अगर उनके दरमियान एक डिफरेंस है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, तो फिर रिजल्ट जो है वो डाउटफुल हो जाते हैं और इंटरनल जो वैलिडिटी है एक रिसर्च की, एक्सपेरिमेंट की, वो कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। सो रिसर्चर हियर विल रैंडमली असाइन द पार्टिसिपेंट टू बोथ ग्रुप्स। हियर यू कैन सी द वर्ड पार्टिसिपेंट, इट इज लाइक एन एक्सपेरिमेंट ग्रुप, यू कैन ऑल्सो कॉल इट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एंड कंपैरिजन ग्रुप is also referred to as the control group. Here researcher, in order to see the effectiveness of a specific program on the participant, first will randomly assign the participant to both group and then will apply the treatment or use the intervention and will compare both pre-test and post-test condition. If there is a significant difference in the scores of pre-test and post-test, then researcher will confidently say that specific program put significant impact on the behavior or something else कि जो भी उसने assume कर रखा है, जो hypothesis frame किया है, फिर वो उसके accordingly जो है उसे interpret करेगा। Students, there is an activity for you. How will you use the random group design to study the impact of noise on attention during the class? You are interested in examining the impact of noise on the student attention during the lecture. So for that purpose, you are required to use the random group design. So how will you do that? You are being given 10 minutes to complete that task. Match group design is also research group design, can be used for research purpose. Researcher form parallel groups by matching subjects on pre-test tasks and then randomly assigning the members of these matched tests of subjects to the condition of the experiment. Suppose a researcher is going to carry out an experiment and for that purpose first he will try to match the subjects on pre-test task के कोई ऐसी चीज होगी, टेस्ट होगा या कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी कि उसकी बेस पर रिसर्चर जो है पहले मैच करेगा पार्टिसिपेंट्स को। Then researcher will assign these selected participants randomly to the groups he has formed for the experiment.
फॉर एग्जाम्पल ट्विन स्टडीज होती हैं तो वहां पर भी मैच है ना, कि अगर उनका पर्पस है, ऑब्जेक्टिव ऐसा है, तो जो फैमिली स्टडीज होती हैं तो वहां पर ट्विन्स को लिया जाता है। और इसी तरह मैचिंग जो है दैट कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ एज, जेंडर, स्कोर्स ले लें, आपको टेस्ट लिया, उसका स्कोर्स ले लिए, जेंडर, एज और रिलेशंस की बेसिस पर। सिबलिंग्स भी होती हैं, जैसे बर्थ ऑर्डर के हवाले से रिसर्चेज होती हैं, तो यू कैन यूज मैच ग्रुप डिजाइन फॉर दैट पर्पसेस। वैसे ये जो रिसर्च डिजाइन हैं, ये की ओरिजिन जो है वो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज हैं, लेकिन नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में भी रिसर्चर जो है, स्पेशली सोशल साइंटिस्ट हैं, वो मैच ग्रुप डिजाइन को स्टडी कर लेते हैं। जैसे कपल्स में स्टडी कर रहे होते हैं, सिबलिंग्स में कर रहे होते हैं, तो वो उस बेसिस पर, कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पर मैच ग्रुप डिजाइन को यूज कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट के अलावा नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी में टू सम एक्सटेंट यू कैन यूज द टर्म मैच ग्रुप डिजाइन। स्टूडेंट्स, हाउ विल यू यूज द मैच ग्रुप डिजाइन फॉर अ नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी? अगर आपको कहा जाए कि आप एक नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिजाइन करें और उसमें आप मैच ग्रुप डिजाइन लेंगे, तो आप क्या करेंगे, किस तरह लेंगे और किस तरह के टॉपिक्स जो हैं वो आप चूज करेंगे? आपको 10 मिनट्स दिए जा रहे हैं टू प्रपोज द टाइटल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट स्टडी एंड द मेथड ऑफ यूजिंग द मैच group design. Pre and post test design, it is usually used in quasi experiment where participants are studied before and after the experimental manipulation. Control group may not receive treatment. ये ज्यादातर जो डिजाइन है quasi experiment में होता है, experiment में होता है, where researcher form two different groups or more than two groups. One group is experimental group and another one is control group. So experimental manipulation mean a researcher will apply or use the independent variable and will manipulate it. Manipulate means researcher may increase or decrease the amount or quality of an independent variable in order to see its impact on behavior or something significant researcher is going to study. So experimental group will receive the treatment while control group will not be provided the treatment. For instance, group of children are studied before and after giving positive reinforcement. If a researcher is going to study the impact or role of positive reinforcement in making a student disciplined and well behaved or to develop a desired behavior among children, so researcher will first form two different groups. One group of children will be experimental group while another group of children will be control group. So researcher will provide the treatment to experimental group and will not provide the treatment, or treatment means positive reinforcement to the children of control group. So researcher first see the impact of researcher will first examine or see the level of problem before applying the treatment or before providing the positive reinforcement to the children of both group. तो प्री टेस्ट में उनको किया जाएगा, इसके बाद positive reinforcement दी जाएगी and again they will be tested. अब दोबारा उनको क्यों टेस्ट किया जाता है, उनके बिहेवियर को क्यों असेस किया जाएगा, ये देखा जा सके कि जो पॉजिटिव इन्फोर्समेंट दी गई है उसका कोई इम्पैक्ट आया है क्या, उसने वो डिजायर्ड बिहेवियर डेवलप किया है। तो इस तरह के रिसर्च डिजाइन जो है वो आप यूज कर सकते हैं। यू कैन डिजाइन प्री एंड पोस्ट टेस्ट इन दैट वे। फर्स्ट यू विल असेस द प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर एंड देन यू विल प्रोवाइड द रेनफोर्समेंट एंड अगेन असेस द प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर in order to determine the impact of a positive reinforcement on the problematic behavior। कि desired behavior develop करना है, problem को reduce करना है, तो प्री टेस्ट में और पोस्ट टेस्ट दोनों में से कंसीडर किया जाएगा। तो अब यहाँ पर रिसर्चर जो है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पर भी प्री एंड पोस्ट टेस्ट जो है वो कर सकता है असेसमेंट, और कंट्रोल ग्रुप के साथ भी कर सकता है। तो फिर ये देखा जाएगा कि कंट्रोल ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स उन बच्चों में और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के बच्चों में क्या डिफरेंस है। सो स्टूडेंट्स, नाउ यू आर being given a task of framing a hypothesis to use the pre and post test design for your study. So you have 10 minutes to complete that task। और उसके साथ आपको पूरा डिजाइन भी करना है, प्री एंड पोस्ट टेस्ट आप किस तरह उसको लेकर चलेंगे।